Assalamu alaikum dear students of class 1. I hope you are fine and safe at your homes. I'm your English teacher and today I'm here to guide you about your English homework. Today the date is 24th January 2022 and the day is Monday. Our today's task is on our English school workbook. We have to do page number 37 and 38. We will do revision of two different concepts जो कि हम already classroom में कर चुके हैं. First one is masculine and feminine and second one is the use of these and those. Before starting our lecture, please note that this work is for both group. Group A will do this work on Tuesday 25th January 2022 and Group B will do this work on Monday 24th January 2022. So let's begin our first topic, that is masculine and feminine gender. We know that genders two types के होते हैं. First one is male and the second one is female. Male को हम masculine gender कहते हैं जबकि female को हम feminine use करते हैं. So we can say that a noun that represent a male is called masculine gender and a noun which represent a female is called feminine gender. किसी भी चीज़ का नाम अगर वो male हो तो उसके लिए हम masculine use करेंगे और अगर female हो तो feminine use करेंगे. Let's see the example. Boy is the example of masculine gender and feminine girl is the example of feminine gender. Boy, girl. Bull, cow. Man, woman. Horse, mare. Father, mother. Lion and lioness. Now please open page number 37. First you have to write date and day according to your class group. You have to match the masculine gender with their feminine gender. जो भी हमने प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंगली हम मैचिंग करेंगे इस पेज पे. नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकंड टॉपिक, दैट इज़ दीज एंड दोज. यूज़ ऑफ दीज एंड दोज इज़ क्वाइट सिमिलर टू द यूज़ ऑफ दिस एंड दैट. दिस और दैट का कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ चुके हैं. वी यूज़ दीज एंड दोज विद persons, places, animals and thing. हम दिस यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए और प्लूरल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं दीज और दोज. वी यूज़ दीज फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू अस एंड वी यूज़ दोज फॉर द थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस. जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसके लिए हम दीज यूज़ करते हैं और जो दूर होती हैं उसके लिए हम दोज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज कैंडीज आर नियर टू अस सो वी विल राइट दीज हेयर and those cupcakes are far from us, तो हम इसके लिए those यूज़ करेंगे. I hope you understand this concept. Now open page number 38. You have to mark date and day according to your class group and you have to fill the blanks. आपने headings को read out करना है और आपने objects की places के according these और those का इस्तेमाल करना. I hope you understand today's lecture. Thank you so much for watching.